Welcome guys, my name is Laiba and today my topic of presentation is gene therapy. Let us discuss some about gene therapy, and first of all I will tell you about what is gene therapy. Let's take its definition. Let's take its define. Experimental technique for correcting defective genes that are responsible for disease development. As we have contained genes and there are also problems in genes की डिफेक्ट्स आ जाते हैं जीन्स के अंदर और ये प्रॉब्लम करते हैं, इस तरह डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये टेक्निक हेल्प करती है डिफेक्टिव जीन्स जो कि डिजीज़ डेवलपमेंट कॉज कर रहे हैं, तो ये टेक्निक हेल्प करते हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। तो ये जो है टेक्निक कहलाती है जीन थेरेपी। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी इन्वॉल्व इंजर्टिंग ए नॉर्मल जीन टू रिप्लेस एन एबनॉर्मल जीन। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है जीन थेरेपी की वो ये है कि हम इन्वॉल्व इसमें नॉर्मल जीन को रिप्लेस करते हैं एबनॉर्मल जीन से, मतलब एबनॉर्मल जीन निकाल के उसकी जगह नॉर्मल जीन एडजस्ट करने जाते हैं। The approach is used replacing a mutated gene that causes disease with a healthy copy of the gene. Mutated gene जो cause कर रहा है disease, उसकी जगह हम healthy copy of gene replace कर देते हैं. Inactivating or knocking out a mutated gene that is functioning improperly. Inactivate करते जाए उन mutated gene को जो कि function नहीं कर रहे proper तौर पर. Introducing a new gene into the body to help fight a disease. बॉडी के अंदर डिजीज़ के फाइट के लिए न्यू जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए. Here some researchers are studying gene therapy for a number of diseases. These are included such as severe combined immunodeficiencies, SCD, hemophilia, Parkinson's disease, cancer, and HIV. Let's discuss the history and development of gene therapy. In 1960, the concept of gene therapy was introduced. In 1990, the first approved gene therapy case at the National Institute of Health UK. It was performed on a 4-year-old girl named Shanti Deslaiva. It was a treatment for a genetic defect that left her with an immune system deficiency. ये यूके में एक 4-year-old गर्ल थी, इसके अंदर ये डिजीज़ थी, इसके अंदर एडीपी प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं था और ये कहलाती इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी थी। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके अंदर उसकी ट्रीटमेंट किया गया जीन थेरेपी से और दैट बिकम सक्सेसफुल and that was held in National Institute of Health UK in 1990. Sickle cell disease is successfully treated in mice. 2006 scientists at the National Institutes of Health have successfully treated metastatic melanoma in 2 patients. In 2006 में साइंटिस्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मेटास्टेटिक मेलानोमा डिजीज़ 2 पेशेंट्स में जो थी ट्रीट की थी। तो इस स्टडी से हमें पता चला कि जीन थेरेपी इज़ आल्सो इफेक्टिव इन कैंसर ट्रीटमेंट. In 2007 to 11, research is still ongoing and the number of diseases that has been treated successfully by gene therapy increases. Here are some two types of gene therapy: germline gene therapy and somatic gene therapy. Germline gene therapy. First of all, let's discuss it. अब मैं आपको बताती हूँ germline gene therapy क्या है. In this technique, therapeutic gene transfers into germ cells. इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, थेराप्यूटिक जीन होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है जर्म सेल्स के अंदर. और फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल ये है कि इन एग्स एंड स्पर्म्स के अंदर थेराप्यूटिक जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं. इसको हम कहते हैं जर्मलाइन जीन थेरेपी. इसके इट रिजल्ट्स इन परमानेंट चेंजेस एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एलिमिनेटिंग सम डिजीज फ्रॉम पर्टिकुलर फैमिली. Some people view this type of therapy as unusual and liken it to playing God. कुछ लोगों का व्यू है कि ये थेरेपी जो है या unusual है या अनप्रॉपर है, that they think that this technique is for teaching God. Then they think that this technique is unusual or improper. Others have concerns about this technical accepts. Somatic gene therapy. In this technique, therapeutical genes are inserted in somatic cells, for example, bone marrow, blood cell, and skin cells. जर्मलाइन जीन थेरेपी के अंदर थेराप्यूटिक जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं जर्म सेल्स के अंदर, जबकि सोमैटिक जीन थेरेपी के अंदर थेराप्यूटिकल जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर. It affects only the targeted cells in the patient and is not passed to future generations. ये future generations में ट्रांसफ़र नहीं होती. It means that it is not inherited. Short-lived because the cells of most tissues ultimately die and are replaced by new ones. Appropriate and acceptable for many disorders such as including cystic fibrosis, muscular dystrophy, cancer, and certain infectious diseases. Types of somatic gene therapy. Ex vivo cells are modified outside the body and then transplanted back in again.
टू टाइप्स हैं सोमैटिक जीन थेरेपी की, एक्स विवो एंड इन विवो। एक्स विवो में जो जीन ट्रीटमेंट होता है वो आउटसाइड द बॉडी अकर होता है, जबकि इन विवो में जो ट्रीटमेंट होता है जीन ट्रांसफ़र का वो इनसाइड द बॉडी अकर होता है। एक्स विवो में क्या करते हैं कि सेल्स को मॉडिफाइड किया जाता है आउटसाइड द बॉडी एंड देन दे ट्रांसप्लांटेड अगेन बैक इनटू द बॉडी। इस टेक्निक को it is called ex vivo because the cells are treated outside the body. It is called in vivo because the gene is transferred to cells inside patient's body. Here is some difference between the in vivo and ex vivo gene therapy delivery system. In vivo and ex vivo. In vivo is less invasive, ex vivo is more invasive. That is technically simple and ex vivo is technically complex. In vivo, vectors introduced directly, and in ex vivo, no vectors introduced directly. In vivo safety check not possible, while in ex vivo safety check possible. That's because that in vivo occurs inside the body, then safety check is not possible. Disease control over target cells, close control possible. Some vectors for gene therapy can be classified into two types: viral vectors and non-viral vectors. Viral vectors includes adenovirus, retrovirus, adeno-associated virus, lentivirus, etc. While non-viral vectors include physical methods, electroprotein, gene guns, sonoprotein, magnetofaction, etc. Chemical methods include oligonucleotides, lipoplexes, polymerazones, polypeptides, polyplexes, dendrimers, etc. Success cases of gene therapy में blindness and Parkinson's disease आते हैं. Gene therapy, how gene therapy cures blindness. ये cure blindness of inherited conditions. Leber's congenital amaurosis. It's an inherited disease. This condition appears at birth or after the birth in first few months of life, and it causes progressive worse and loss of vision. Parkinson's disease symptoms are tremors, motor skill problems, and rigidity. जीन थेरेपी जो है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है सिम्टम्स को क्योर करने में जो पार्किंसंस डिजीज़ की हैं, जो मैंने आपको भी बताई हैं. मेन ओवर एक्टिव brain region, the subthalamic nucleus should be introduced with gene. This would produce GABA, an inhibitory chemical. Then they could potentially quiet the brain region, alleviate tremors. Advantage of gene therapy and disadvantage of gene therapy. Advantage of gene therapy, first of all हम डिस्कस करते हैं. Give a chance of normal life to baby born with genetic diseases. बेबी बॉर्न होता है जिनमें जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जेनेटिक डिजीज होती हैं. जीन थेरेपी उनको क्योर करती है और बेबीज़ को चांस देती है नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने का. गिव होप ऑफ हेल्थी लाइफ टू कैंसर पेशेंट. फॉर कंटेन डिजीजेस दैट डू नॉट हैव एनी क्योर एक्सेप्ट जीन थेरेपी, इट कुड सेव मैनी लाइव्स. ऐसी बहुत सी डिजीज हैं जो किसी टेक्निक से क्योर नहीं हो सकती एक्सेप्ट जीन थेरेपी के, सो इट कुड सेव मैनी लाइव्स. Disadvantages of gene therapy, as I said, some advantages, there are also some disadvantages of gene therapy. The genetic testing, screening, and research in finding the availability of contained gene is very controversy. May increase rate of abortion if parental test regarding baby with genetic disease is done. The cost is very high, and the patient might need an insurance to cover the treatment. Thank you.